we're discussing composite functions. We'll start where we left off yesterday and slightly before that, in fact. So the other day we were discussing when is it possible to form a composite function. So we did this example. Let's quickly go over it again. In fact, no, let's do the second example of the same type. So I had you guys do this example the other day, and we determined if is it possible to form the composite function fg, and then we discussed if it's possible to find the composite function gf, and the answer was no in both the cases. So today we're going to follow the same method, but we will use this f and this g. Okay, so the question is still the same. Is it possible to form composite function what's the composite function gf? Okay, when is it possible to form a composite function gf? When the range of f should lie within domain of G. So you have to check if the range of the inner function, which is the function at the right, or the input function. So the range of f should be within range, should lie within range domain of G. Okay. What do we mean by that? Let's show function G, its input and output. So the input function here, sorry, is f. So we're going to start with f. F is 2x minus 5. What's the allowed input values of f, or the domain of f? They're 2, 3, 4, 5 if we're only taking integer values, although there are the 2 to 5 means all the values between 2 to 5, so including decimal values and fractions and everything. Okay, so that's the integer, allowed integer input. And then what's going to be the output? इसको कहते हैं input, and then the output for this one is going to be -1, then 1. Why do I feel like we did this the other day? It's the same except for the domain of Okay, G. okay. So it's going to be -1, 1, and 3, and 5 times 2 is 10, minus 5 is 5. So these are the output values. Okay, now we're going to feed these into G. So G is x square. Just give me a second, guys. I'm going to mute real quick. किसने? अच्छा, ठीक है, सोच ठीक. Yes, sorry, someone wanted to talk to me. Okay, so -1, 1, 3, and 5. Now you have to check whether is this the allowed input for gx. So what's the allowed input for gx? It's -1 to 5. This is also -1 to 5. So that means we're allowed to give this as input to G. That means that this composite function is possible. And let's just go over this again.
The range of f, what was the range of f? This was the range of f. Should lie within the domain of G. And what's the domain of G? This. So since these are exactly the same, so hence composite function is possible. So it is possible to form the composition GF. All right? Is that understood? Dua and Abu Bakr. Yes. Yes, miss. So since domain, sorry, range of inner function, range of f, which is the output of f, lies within or is the same as, is question mein, so it's exactly the same, lies within the domain of G, hence composition GF is possible. Okay. Next example is you have to check is it possible to find FG. Okay. Now we're going to check the same for FG. Okay. For FG, now what do you need to show? Show that inner function is this, range of this. Show that range of G lies within. It's not possible. नहीं है possible. इतनी Miss, जल्दी पता नहीं. चल गया. Okay, let's see. Lies within domain of F. And by lies within, I mean less than होना चाहिए या equals to होना चाहिए. Okay, so the inner function is G. Start with that. G is x square. Input for that is -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and all the decimal values in between. So output for that would be -1 square is 1, 0 square is 0, 2 square is 4, 9, 16, and 25. Okay. Is that allowed input for the function f? No. What is the allowed input for function f this? I So mean, it's partially allowed. it's partially inside, yes, but it is still not allowed. Yep. Since range of G lies outside or partially lies outside domain of f, sorry, domain of, yes, f. Hence, FG is not possible. Okay. These examples were linked to the questions that ask you whether it's possible to form composite function FG or GF or whatever alphabets. Now we're going to discuss how to find domain and range of a composite function. So the next subtopic of composite function is finding domain and range of a composite function. Okay. So if there's a function GF and if there's a function FG,
Now, what's going to be the domain of GF and what's going to be the domain of FG? Domain जो होती है ना वो हमेशा inner function की होती है. So for GF, the domain is going to be the domain of F. Domain of GF equals domain of F. And here, domain of FG equals domain of G. Okay. Range of GF lies within or is less than equals to range of P. Similarly here, range of FG is less than equals to or lies within range of F. Now let's take a look at the example question, and that will give more clarity to the statements we've just written. Okay. So fx is this 2x minus 5, and its domain is 2 to 5. And gx is x square, and its domain is minus 1 to 5. Find the domain and range of gf function. So from the previous statement we just wrote down, what's going to be the domain of gf? F. Yes, it's going to be the same as domain of f. So what's the domain of f? This. So gf की भी domain यही होगी. Domain of gf equals domain of f, which is x is less than equals to 2, less than equals to 5. Okay, yeah. Okay. What is the range of gf? Less than equal to minus 1 to Yeah, 5. it should lie within the range of g. What's the range of g? We don't It's have minus any. 1 to We have to find it. अच्छा Yeah. ये क्वेश्चन में तो ये डोमेन है हाँ, जी. domain given है, range नहीं given. This is the domain of g. इसकी Right. range find कर लें. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर. Although that's not part of the solution, it may be, it may not be, क्योंकि ये equals to भी हो सकता है और उसके अंदर अंदर भी lie कर सकता है. So we let's just write down the range of g. Range of g क्या होगा? What's going to be the smallest possible value of x square in the domain minus 1 to 5? 0. 0. Yes. 0 square is 0. And what's going to be the biggest value of 25. x square? 25. Yes. अब देखते हैं कि will it exactly be the same as the range of g या इसके अंदर अंदर कहीं lie करेगा. For example, अगर हमारा आंसर आ रहा है 1 to 15, तो वो भी ठीक है because 1 to 15 does lie between 0 to 25. Okay. Now, how do we find the range of GF? We use the method we used a while back to determine if a composition is possible or not. The inner function is f, which is the input function,
2x minus 5, and its allowed values are between 2 to 5. So 2, 3, 4, 5, which gives an output of, what was that, minus 1? 1, 3, 1, 5. yes, 3 and 5. Okay, which is going to be fed to function gx, उसका ये input बन गया. By the way, इसमें ना हमेशा composition possible ही होती है. So you don't have to check whether this is lying in this, like we were doing to find whether the composition is possible if not or not. If they're asking you to find domain and range of GF or FG, that means it's definitely possible to find GF and FG. You don't have to first check कि possible भी है या नहीं. It is possible. It will be possible. That's why they're asking you the next thing, the domain and range. Okay. So this is G, which is x square. अब इसमें 0 भी आएगा, by the way. -1 से का square is 1. 1 का square is 2. 3 का square, sorry, 1 का square is still 1. Square of 3 is 9. Square of 5 is 25. Also, you have to include 0 here. Because ये जो -1 to 5 है, ये integer values नहीं है. It's everything between -1 to 5. So this is everything between -1 to 5 as well. ठीक है? Or sorry, this 2 to 5 is also everything between 2 to 5. So when you feed the values 2, 3, 4 and 5, the minimum value is -1 and the maximum value is 5. इनके बीच के भी सारे answers आएंगे for one value or another. ठीक है, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, इनके बीच में सारी डेसिमल वैल्यूज पॉसिबल है. सो इसी तरह यू विल हैव 0 here as well. So when you square 0, you get 0. So your output is 0, 1, 9, 25, and in fact everything in between. Minimum value 0 and maximum value 25. So you have your range. So we're feeding the range of fx to gx? Yes. Okay. Exactly. So this is between 0 to 25. So the output of our input of our function was 2, 3, 4, 5, and the output of our function is 0 to 25. So domain तो हमने पहले लिख ली थी, दोबारा लिख लेते हैं. Composite function की domain है 2 to 5. In fact, everything between 2 to 5. And the range of the composite function, you may write GF and then the inequality signs. So the range of GF is between 0 to 25. Sometimes it's not exactly the same as this. उसके अंडर कुछ आ जाता है, तो आपने यही रेंज लिखनी होती है. This is your range of GF. Not that one, not the range of G. जरूरी नहीं है हमेशा range of G और range of GF same हो, वो उससे less than भी हो सकती है. There's another way of finding the range of GF. डोमेन तो हमें पता होता है, सेम एज द डोमेन ऑफ एफ. रेंज के लिए हमने क्या करना होता है? फर्स्ट यू फॉर्म द कॉम्पोजिट फंक्शन gf. What is going to be the composite function gf? F is fed to g. So the composite function gf is 2x minus 5 whole square. Is that correct? Yep. ठीक है. So अब इसका इनपुट हमें पता है, इनपुट इज 2 to 5 because the domain is the same as domain of f. If the input is 2 to 5, what's going to be the output? When we substitute 2 instead of x, what do we get? 1. Sorry? क्या 1. आता है? 1? Yep. ठीक है, 1. So 1 आता है आंसर. और क्या आता है? When you feed 5 to it, you get 5. But do you get 0 as well? Maximum value I know is 5. Minimum value I think is going to be 0. Yes, it's going to be 0. Why will it be 0? क्योंकि अगर मैंने इधर 5/2 एंटर कर दिया,
तो ये 0 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, मिस 5 माइनस 20 हम्म मिस 25 नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। 25 हाँ 25 सॉरी, maximum value is going to be 25. Okay, minimum value is going to be 0. The reason is क्योंकि आप ब्रैकेट 2x माइनस 5 को 0 बना सकते हो, और कैसे बना सकते हो, जब x की वैल्यू 2.5 है, 2.5 is in this domain, so 0 भी आएगा, so 0 square is 0. ठीक है, you have to जीरो be a हमेशा bit आएगा? careful. Sorry, जीरो हमेशा आएगा? नहीं हमेशा नहीं आता, अच्छा, होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन में हमेशा चेक करना चाहिए, काफी पॉसिबिलिटी होती है 0 आने ठीक है। की. So these are the two ways of finding the range of composite function. Either you draw the block diagram or you directly find the function gf और उसको f की input दे देते हैं, क्योंकि gf का domain तो f का ही domain होता है, and when you give it the input of f, it will give you an output, and that output is the range of gf. Okay, let's do another example. Suppose fx is this and gx is this. Find domain and range of fg. So what's going to be the domain of fg? जी. Yes, same as domain of g. So domain of fg is equals to domain of g, which is -1 till 5. Now these are all the values between -1 to 5. Now range of fg will either be exactly equals to or less than or inside the range of f. Range of f. Let's first see what's the range of f, just for clarity, कि हमारी exactly same आएगी या उसके within आएगी, slightly less than आएगी. What's the range of this? इसकी domain है -1. -2 से 30 तक. Yes. अच्छा, नहीं, आई थॉट ये वही क्वेश्चन है. So when x is -2, fx would be -9. -9. So हम minus सारी वैल्यूज देंगे या लाइक मिनिमम एंड we just मैक्सिमम? write it in form of inequality, सारी नहीं लेते. Minimum value इसकी होगी -9, the greatest negative value or the smallest negative value, or biggest value would be 30 times 260 minus 550. 55. So the range of f is between -9 to 55 if its domain is between -2 to 30. अब देखते हैं कि हमारी एफ जी की डोमेन एग्जैक्टली सेम आएगी या इसके अंडर लाई करेगी. ओके, so first method we'll use is the block method. The inner function is g, so we start with the domain of g. Domain of g, or the allowed input values, are -1, 0 till 5. So the output, the minimum output would be 0,
and then 1 4 etc. इसके बीच की भी वैल्यूज होती हैं. डोंट थिंक दैट इसका डिस्क्रीट इनपुट है और डिस्क्रीट आउटपुट है. नहीं, डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूस है. Okay, and then square of 5 is 25. Okay, now that is going to be fed to the outer function, which is f, which is 2x minus 5. What's going to be the smallest value here? -5. Yes, it's going to be minus 5. When x is 0. And then what's going to be the biggest value here? 45. 25 times 250, yes, and 45. So our range of fg is between -5 to 45. Is it the same as the range of f? No, it's not. It's less than. It's Yep. slightly less than, right? उसी के अंडर लाई करनी चाहिए या इक्वल्स होनी चाहिए exactly the same as that या उसके अंडर लाई करनी चाहिए. So it is lying under that domain of f. मैंने वहाँ g गलती से लिखा है. It's supposed to be f only. This is supposed to be f. So the domain of range of fg is not the same as the domain of f, but it is lying within the given limits. So that's the domain, sorry, that's the range. And what was the domain? This. Okay. Another way of directly finding the range of fg is by forming fg first. What's going to be the function f of g? Can you form fg from f and 2x square minus 5. yes, 2x square minus 5. अब इसकी allowed input values क्या हैं? Same as g's input value, which are -1 to 5. So the smallest value we know will be when x is 0. So that would be -5. And the biggest value is when x is 5. So 5 square is 25. 25 into 2 is 50. 50 minus 4 is 45. So that is how you find domain and range of a composite function. Any questions there? हमें रेंज चेक तो नहीं करनी होती ना? चेक करनी चाहिए? करनी चाहिए? नहीं, अच्छा. वो ऑटोमेटिकली या एग्जैक्टली सेम होगी या उसके अंडर लाई करेगी. आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट टू यू. व्हाट इज मेंट Right. बाय दिस लेस देन इक्वल्स टू. वरना आपको कोई जरूरत नहीं है करने की. ठीक है अबू बकर, आर यू हियर? जी मिस. ओके, चलिए ये कॉम्पोजिट फंक्शन का टॉपिक खत्म हुआ. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू डिस्कस इन फंक्शंस. थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं. ओके, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की हमने बात की थी इन द वेरी फर्स्ट लेसन. लेट्स जस्ट क्विकली गो ओवर दैट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट inverse of functions. What's the inverse of function 3x plus 1? Abu Bakr, can you tell me? How do we find inverse of 3x plus 1? मिस y इज इक्वल्स टू 3x प्लस मिस x को सब्जेक्ट बनाएंगे. So y equals 3x plus 1, then make x the subject. So y minus 1 over 3 equals x. And what's going to be the final answer? x minus 1 over 3. Yes, so f inverse of x equals x minus 1 by 3. Okay. इसके बाद
हम दोबारा करेंगे, बट अभी since we discussed fx and f inverse of x, knowing the graphical relationship between fx and f inverse of x is also in your syllabus. किसी को पता है क्या होती है graphical relationship between the graph of fx and graph of f inverse of x? Reflection? Reflection on which line? क्या मतलब? You said reflection, Yup. but reflection on which line? बहुत सारी lines होती है ना line of reflection. Reflection होगी on the line y is equals to x. So if the graph of 3x plus 1 is, for example, like this, then the graph of f inverse of x would be like this. It will be its reflection on the line y is equals to x. Similarly, if a graph of a function is like this, then you will reflect it on this line and get a graph like this. One of these would be fx and the other one would be f inverse of x. That's the graphical relationship between a function and its inverse. So अगर यहाँ पे आपके पास 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. अगर यहाँ पे let's say -5 है तो यहाँ पे भी -5 आ जाएगा. This is, let's say, 8, then this will be 8. If this is -4, then this will be -4. x की वैल्यू y पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, y की वैल्यू x पे रिफ्लेक्ट हो जाती ठीक है. है. Now let's talk about domain and range of inverse function. Let's say there's a function fx. Domain of that is x is between, let's say, -1 and 8. And range is between, range के लिए middle में fx ही लिखते हैं. Let's say fx is between, for example, 2 to 5. Okay. Then what will be the domain and range of f inverse of x? If you have the domain and range of fx, it's very easy to find domain and range of f inverse of x. What happens? The That domain. the range becomes domain and the Yup. domain becomes range. So now the domain will be 2 to 5. Domain को हम x के साथ लिखते हैं. And the range is going to be -1 to 8. So -1 less than equals to, you have to write f inverse of x in between, and then 8. So Abu Bakr, can you repeat this? Okay, inverse of मिस function की domain and range कैसे आती है? मिस जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी वो डोमेन बन जाएंगी और जो उसकी डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी. बिल्कुल सही है. ये कहना बड़ा आसान होता है, बट बच्चे पता है इधर गलती करते हैं. अब ये डोमेन है ना, तो डोमेन के मिडिल में एक्स ही आना चाहिए. एफ एक्स नहीं लिखना होता, ये यहाँ नहीं कॉपी करना होता. और इधर रेंज है, तो रेंज के मिडिल में क्योंकि एफ इनवर्स एक्स की रेंज है तो मिडिल में एफ इनवर्स एक्स आएगा. एफ एक्स नहीं लिखना होता. Okay, now let's take a look at the example. Fx is this,
and domain of fx is between 2 to 4. 2 और 4 included नहीं है क्योंकि उसके साथ equals to sign नहीं है. Find f inverse of x and state its domain and range. So what do we do? Let's start with f inverse of x. Yes, Dua. We're going to make x a subject and replace fx with y. Yes. So y equals 3x 3x plus plus 1, 1. y minus 1 over 3 equals to x. Yes. Y minus 1 by 3 equals x, which is x minus 1 by 3 equals f inverse of x. So that's f inverse of x. What's the domain of f inverse of x? चलो range से पहले start करते हैं. What's the range of f inverse of x? 2 till 4. Yes. Why is it 2 to 4, Abu Bakr? मिस चूंकि डोमेन मिस आपने क्या पूछा है? Range f inverse x की क्या है? मिस 2 till 4 क्योंकि वो एफ ऑफ एक्स की वो रेंज है तो उसका इन्वर्स डोमेन होगा. ठीक है, तो अब मैं ये कैसे लिखूं? रेंज ऑफ f इनवर्स x मैंने लिखनी है. मिस इसको आप लिखेंगी मिस 2 ठीक है. is less than equal to f inverse of x is less than equal to 4. ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और इसके 0 मार्क मिल जाएंगे. वजह ये है कि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं था. आपने इक्वल्स टू नहीं लिखना. ओके. ठीक है. अब मुझे बताओ रेंज कैसे आएगी, इसकी डोमेन कैसे आएगी f इनवर्स ऑफ x की? मुझे 2 till 4 की वैल्यूज हम डालेंगे x माइनस 1 ओवर 3 में. फिर नहीं नहीं, उसमें नहीं डालो, इसमें डाल दो डायरेक्ट. वैसे उससे भी हो सकता है, एक ही बात है. बट काफी क्वेश्चन में होगा कि ये आपसे निकलवाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट उससे ही पूछेंगे. तो उसकी मुझे रेंज बता दो, इसकी रेंज क्या होगी? मिस मिस मिनिमम वैल्यू होगी 7 ठीक है. और हाईएस्ट वैल्यू होगी 13. ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगी 7 to 13. सो 7 लेस देन x लेस देन 13. ओके. Okay, now we're going to discuss how to find inverse of quadratic function. वो थोड़ा सा different होता है. Inverse of quadratic function. Okay, let me give you an example. You have to find the inverse of this function. It's a quadratic function, you have to find its inverse.
मिस हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ बनाएंगे। सो वी गेट y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स रूट। एक्स स्क्वायर। यस। अब हाउ डू वी मेक x द सब्जेक्ट? यहाँ तो x स्क्वायर आ गया। मिस स्क्वायर रूट। Yes, square root. So you write square root y minus 1, write plus minus here equals x. अब जब आप रिप्लेस कर रहे होते हो ना x y की जगह x को, अब ना यहाँ पे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों नहीं आते। ठीक है, या प्लस आता है या माइनस आता है। वो कैसे पता चलता है? वो इससे पता चलता है, x इज ग्रेटर देन 1 में x की वैल्यूज 1 से ज्यादा हो रही हैं या कम हो रही हैं? ज़्यादा। ज़्यादा। ज्यादा हो रही हैं। So in that case you only have to choose positive value. So you only write plus 1. Plus 1 only because x is greater than 1. So यहाँ you must not show plus minus, only plus. प्लस माइनस लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। और इसकी लॉजिक क्या है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि f और f इनवर्स में क्या होता है कि अगर f की डोमेन जो होती है वो f इनवर्स x की रेंज बन जाती है। तो यहाँ पे देखो डोमेन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रेंज भी पॉजिटिव होगी। जो fx की डोमेन होती है that becomes the range of f inverse of x. So if fx has a positive domain, then f inverse of x will have a positive range. सो पॉजिटिव लेते। अगर यहाँ होता x इज लेस देन 1 तो फिर हम लेते हैं नेगेटिव साइन, नेगेटिव x माइनस 1। ओके, अनदर एग्जांपल। थोड़ी मुश्किल एग्जांपल है। You have to find inverse of this function. So what do? We make y the subject. We replace gx with y. I'm going to square y as well simultaneously. X square plus 2x minus 1. अब हम x को कैसे सब्जेक्ट बनाएं? यहाँ तो एक x स्क्वायर की टर्म है और एक x की टर्म है। हाउ कैन वी मेक x द सब्जेक्ट? मिस कॉमन लेके। कॉमन लेके एक x रह जाएगा अंदर ब्रैकेट के। इसको चेंज करोगे कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में, उससे बन जाता है x सब्जेक्ट। ओके, इट्स ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस 2a, b क्या होना चाहिए थे? 1। यस 1। फिर साथ होता है प्लस 1 स्क्वायर, ये मैंने खुद से एंटर किया है, इसको मुझे काउंटर करना पड़ेगा विद माइनस 1 स्क्वायर एंड देयर इज ऑलरेडी अ माइनस 1 इन द क्वेश्चन। So this together becomes x plus 1 whole square. And then outside there's a minus 2 equals y. Now equals to y square. Now can you make x the subject? Yep. Bring minus 2 to the other side, y square plus 2. Square root both sides, so you get plus minus. And you have x plus 1 here. Move plus 1 to the other side, it becomes minus 1. So I'm writing minus 1 plus minus
square root x square plus 2 equals x. Last step would be x gets replaced with g inverse of x minus 1. You can't write plus minus, you have to choose one of them. Which one gets chosen here, plus or minus? Plus. Yes, because here the values are greater than 1. Greater side पे जा रहे हैं, so we have to use plus. Okay. Sure. I think there's one or two more things to discuss. Let's just quickly go over it. छोटी छोटी बातें. हमने f और f इनवर्स के की ग्राफिकल रिलेशनशिप कर ली है. अब उसके क्वेश्चंस हम वर्कशीट में करेंगे. We've already discussed that fx and f inverse of x graphs are reflections of each other on the line y is equals to x. So this is the graphical relationship between fx and f inverse of x. This is f inverse. Okay. Another thing, it's not always possible to form an inverse of a function. हमेशा एक fx का f inverse of x नहीं निकल सकता. So when is it possible to find f inverse of x? Possible to find f inverse of x. Find f inverse of x. It's possible only when fx is a 1-to-1 function. Now what's a 1-to-1 function? Okay. Now I've drawn sketches of four different functions. All of them are, we won't be able to find inverse for all four of them. How can you tell कि इनमें से किस फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, किस फंक्शन का इनवर्स नहीं फाइंड किया जा सकता? You need to see which of these are 1-to-1 function. 1-to-1 function का इनवर्स हमेशा फाइंड किया जा सकता है. अब 1-to-1 function क्या होता है? 1-to-1 function वो होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करता है. Passes horizontal line test. हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था जब हमने फंक्शंस पढ़ना स्टार्ट किया था. वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन एक फंक्शन हो. अगर एक कर्व vertical line test pass कर रही है, like this one passes the vertical line test, this one passes the vertical line test,
This one passes vertical line test. This one passes vertical line test. So all of these expressions are actually functions, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करें। इसी तरह से अब आपको ये पता है कि ये सारे फंक्शंस है, बट क्या इनमें से हर का इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है? हर का इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, खाली उसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है जो वन टू वन फंक्शन है। वन टू वन फंक्शन क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करे। Let's draw horizontal lines in each of these curves and see whether there's one point of intersection or more than one point of intersection. Here, wherever you draw a horizontal line, it will cut your curve at only one point. So this one has passed the word horizontal line test. This one has also passed the horizontal line test. It's only intersecting here. This one fails the horizontal line test because it's intersecting the curve at 2 points. So this, you cannot find inverse of this function because it has failed the horizontal line test. Similarly, this one also fails the horizontal line test. It's actually intersecting the curve at 3 different points. So it also fails the horizontal line test. So you cannot find the inverse of the last two functions, but you can find the inverse of the first two functions because the first two functions are one-to-one functions and the last two are not. वन टू वन फंक्शन होता क्या है कि x की एक वैल्यू के लिए एक ही y का आंसर आना चाहिए, एक से ज्यादा y का आंसर नहीं आ सकता। जैसे थर्ड और फोर्थ ग्राफ में यहाँ, सॉरी, y की एक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू होनी चाहिए। सो ये जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, अब यहाँ x के 2 आंसर्स आ रहे हैं। जब y 3 है तो एक x की वैल्यू ये होगी और एक x की वैल्यू ये होगी। ये वन टू वन फंक्शन है। For a one-to-one function, each y should correspond to one value of x only. In a one-to-one function, each value of y must correspond to or must map to one value of x. Otherwise, it's not a one-to-one function. Okay. ये हो गया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपने इसको वन टू वन बनाना है। ये क्वेश्चन आता है। It's not one to one at the moment because it fails the horizontal line test. You have to make this a one to one function. अब वो इसलिए कैसे? मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग एंड होने वाली है, कितनी देर रहेगी है? बस 1 मिनट। 2 minutes. 1 मिनट में बस लेसन खत्म हो जाए। अच्छा, इसकी भी लिमिट होती है 1 घंटे की। ओके। अच्छा देखो, ऐसा ग्राफ है, ये यहाँ 2 पे टर्न कर रहा है। अब अगर आपने इसको वन टू वन बनाना है ना, तो आपने फिर ग्राफ इधर से शुरू करना है। तो आपकी x की मिनिमम वैल्यू क्या है जहां से आप ग्राफ शुरू करोगे ताकि ये वन टू वन फंक्शन बन जाए? A. इट्स 2। Oh, sorry, दिस 2. इज 2, इट्स फाइन, दैट्स ऑन मी। ठीक है। सो आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि ये कर्व है, इसको आपने वन टू वन बनाना है, तो फिर x को आपने क्या मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो दैट विल बी 2। ठीक है, बिकॉज अब अगर खाली आप येलो पार्ट देखो तो फिर ये वन टू वन बन गया, क्योंकि वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर ये पार्ट है ही नहीं ग्राफ का। सो आप डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके वन टू वन फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फंक्शन। टुमारो इंशाल्लाह विल स्टार्ट द वर्कशीट। राइट। Okay. अल्लाह हाफिज। Allah ला Hafiz.